audible to everyone? आवाज आ रही मेरी? हेलो तो कम आ रही है। अच्छा कम आ रही है, तो अभी ठीक आ रही है। हाँ थोड़ा सा हेडफोन में टाइम लगता है। आगे सारे फिर we can start. So Samantha, अच्छा Samantha is joining. Just 1 second. This is coming. Some net issue मिल गया। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, ये सिलेबस हमेशा हम लोग टच में रहते हैं बिकॉज विदाउट सिलेबस वी आर गाइडलेस, है ना। You can see the second unit also contains the term operon somewhere here, right? And this is the complete set of. Good evening, sir. Good evening, sir. Have you joined properly? Yes, yes. So, means Radha, you are Pooja or Radha? What I can call you? So actually my nickname is Pooja and my real name is Radha. Good evening, sir. So Radha, you want to join our group, no? Yes, sir. So Parna is head of Great Life Sciences headquarters. Okay, sir. So you can both discuss, and there is a normal formalities so you can do every day. So okay, that sir. will boost, because mainly what we have the positive side, we have a very strong teaching, you know? And one more faculty you might have heard from Pathfinder is Aditya. Aditya. From Pathfinder, very reputed faculty of biochemistry. He left last year, Pathfinder, because of some dispute. So, so actually there is a lot of exploitation. So many teachers are in many situations are not feeling comfortable. So here we developed everything. Every platform is there. We have the apps, we have the website, we have the study material. Continuously alone preparing study materials, right? So I'm doing whatever I'm doing, but selection is also very good. But the student number is very less. So we were discussing with Suparna what we can do. Everything is, despite of everything is good. So what we find that we have a very, we are lacking time, especially me. I'm totally not free. Whole day I'm preparing the lecture and here and there taking examination, PhD students guiding. A lot of other activities are going on. And administrative activity, meetings, a lot of other responsibilities are there. Because this is not my bread and butter. This is my passion, to teaching the CSR, because I did my PhD. Excuse me, sir, I'm interrupting you, but sir, your voice is not so much audible. Your voice is not so much clear to me. Your voice is very clear. Just let me check. Sir, your voice is not clear. Yes. Hello, hello. Now I think voice is clear. Sir, please a little bit loud now, so that I can hear it properly. Yes, sir. Okay, just wait. Because the fan. So I think it's echoing. That's why it is sounding like that. Yes, sir. Sir, you can wear earphones now or headphone, whatever you have now. So, now it's okay, I think. Yeah, now it's perfect, sir. It's perfect now. Yes, sir. Fan was with a very high speed. I forgot to minimize the speed because of weather. No, sir, it's fine. It's fine now. So we were discussing that we have everything very good, and we are also using the blended study. Blended study, you might be knowing that we are using the board first, and then we are explaining with the PPT, because a lot of facts are there, a lot of examples are there, lots of mechanism are there. You have to know, because from any point they can ask question. Yes, sir. And since question is the basis of selections, so if we are missing a single point, then we are missing a year almost. Yes, sir. So I am touching almost every point, making clear all the concepts very clear, so that whenever you are fighting with your judgment, when you have to take the decisions, then your decision should be very clear.
because we are here studying the facts and figures, and based on that we have to take the decisions. So you can see Yes, the sir. syllabus here. Yes, sir. Regulating the expression of phases, we have to study tomorrow. Tomorrow Yes, I sir. will teach you that phases and viruses are very important these days. Why these days? These are very important because of Corona, COVID-19, and a project. One of the project over the COVID-19 vaccine was selected in the ICMR, and I cleared round 2 phase. Okay. I found that my idea was stolen by someone, and they rejected my ideas totally. And later on, over the same idea, the things were developed, and the idea was sold to the American company. That was the pathetic condition, not the Indian people used, because might be they thought that will be very dangerous because I have all the proofs. So that's the kind of things going on. If you have the good idea, good concept, and you can build a hypothesis, your project is going to be selected, and then certainly you are going to prove yourself. So that's the benefit of learning. A lot of benefit is there. So you can see prokaryotic, eukaryotic gene, role of chromatin in gene expression and gene silencing. All these. Yes, sir. First, let me clear you over the board. Then I will proceed to the PPT presentation, a little bit of summary of last lectures, and then we will go through the next, because revision is must. Without revision, if you are going, then you might not be adding the new things, right? Because you forget all the concept from the last lecture. So if you see, we are studying the gene regulation from prokaryotic side and eukaryotic sides. So if you study from the differentiation point of view, then you will see the prokaryotic have simple genome, right? They have the very Yes, simple sir. genomic size. So this genome is going to be controlled because there is a polycystonic mechanism, right? Yes, sir. Polycystonic mechanism. Polycystonic means a multiple round of protein synthesis going to occur with the transcription. So both transcription as well as translation going on simultaneously, right? So what is the sole factor that is controlling here in the prokaryotic gene regulation? So what you will say, what is controlling the gene here? The gene here controlled by the operon, right? Operon is a kind of cluster of genes, right? And here in eukaryote, there is a no operon concept. There is no such operon concept, okay? Yes, sir. So rather than here, there is a different mechanism. Here you can see central dogma is there, and especially you will see DNA. This is also going to be modified under the gene regulation. That is called as the methylation and acetylation, and that is called as the epigenetic changes. Right, epigenetic changes by methylation and acetylation, and they are inheritable. The special feature is that they are inheritable. Operon, all we know, especially two examples are given. One is the lag, another is the TRP, which is broadly been asked. Right. If you see from the last 2 years, there is no question from the lag operon or TRP operon. Rather than a lot of questions, they were focusing on the eukaryotic gene regulation. But you must know the exact difference. So there is one alpha that is monocystonic, na? This is monocystonic in the eukaryotic system. Yes, sir. And here is the polycystonic. Means because the size is very small and a lot of protein is required simultaneously, right? And their mistakes are allowed.
A little bit of mistakes are allowed here in the bacterial system. So kind of operon, like operon, TRP operon, right? A lot of histidine So it operon. means that all the genes are transcribed at once, na? At once here in the polysystem. Yes, But sir. here there is a separate regulator, Yes, right? sir. For each gene. For each Yes, sir. gene there is a separate regulator, and you can say in eukaryotic system there is a activator, there is a separate activator, and there is a enhancer, right? And also there is a silencer. So here is the transcription point, what you call them as a promoter. Yes, sir. Right, here also there you can see operator, promoter, and then in between there is a repressor gene. For example, lac I repressor here in the case of lac operon, Yes, sir. and in the case of TRP, what is the repressor? Tryptophan. TRPR, that is the repressor gene. I'm asking about the gene. Then this is the TRP repressor. This is separate from the tryptophan, right? Tryptophan combined as a co-repressor here, right? Tryptophan is going to combine here as a co-repressor. In the case of tryptophan, when the tryptophan is very high, right, then these are activated and binding to this position, preventing your RNA polymerase to proceed from the being transcribed. There is no way to form the mRNA if this TRPR repressor is activated by combining with the tryptophan. So, and here what you can see, we have not discussed in much detail this eukaryotic part. So central dogma we were discussing here. So central dogma, one part is DNA, and then second part is mRNA, where you can see there is a two-part, pre-mRNA and then post-mRNA, right? And the last stage is translation. So very little scope here in the translational modification, right? In the same year, if you see in the case of operon, so most of the modification or regulation is done at level of transcription. So now you got the idea. Both are almost similar, but complexity is more in the case of eukaryote. The question might be asked, why? But there is more complexity in case of eukaryote. Like you can see the activator there, enhancer there, silencer are there, right? And these all together are absent here, rather than there is a promoter, operator, repressor. Okay. And one more question they can ask, what are the inducer in case of lac operon? What is the name of inducer? Are you comfortable in this board study? This is called the blended study. First we know the concept here, then we will proceed to the PPT way. Because there you can see the more molecular details. This is the factual explanation based on the overview presentation, right? So can anyone answer? What is the inducer in case of lac operon? Sir, lac I. Pardon? Lactose. So Allolactose, sir, allolactose. Yes, this is yellow lactose. Why lactose is not inducer rather than allolactose? Sir, cause it needs to, due to the permeability, it should have to be converted into allolactose. Yes, very good. And also, if you remember the graph, there is a graph like this. This is called as the basal level transcription. What do you mean by the basal level transcription in case of lac operon? Basal level transcription means basal level means a little bit of
there is 3 genes. What are those 3 genes? Lac, Y, then lac, Z. Z, and then Lac. lac, A. lac, pardon, Y, Z, A. and A. A. Okay. So lac Z is going to form what kind of enzyme? Who will answer? Beta galactosidase. This is beta galactosidase, right? And like Y, Permease. permease. Very good. And then like A, Transacetylase. transacetylase. Yes. Acetylase. Acetylase. So what is the function of permease? Permease allow to create a pore. So should I remove all these? Yes, sir. Kind of active figures. I should save one copy so that if you need, I can provide you that. Okay. So now what you can see, this is a bacterial system. Now you can see there is a pore, and in the case of like I, like Y, Z, and A, so small amount of permease is active. Even there is a lack of operon. What is the condition of lack of operon initially? It's on or off? Lack of operon is on or off? Tell me. Off. Off, sir. It is off, right? Why it is off? There's a presence of glucose. Because if the glucose is there should not be energy wastage system, and then it should be off because plenty of glucose is available for the metabolism. Even then also the significant feature of this system is a little bit of, you can see here, this is called as the basal level of transcription. This is called as the basal level of transcription, means still there is a little bit of active operon. This is not completely off. Lack operon is. So all you might be knowing, I have just told Samantha was not there, Bipul was not there. One more faculty may be joining very soon, that is Dr. Aditya from Pathfinder. Okay. So ये इतना वायरल कर दो ये न्यूज़, ठीक है ना, लोगों को समझ में आ जाए, because we have good connections and good faculty will be joining because students are very less, so उनकी भी expectation रहती है थोड़ा मुझे payment मिले, थोड़ा ज़्यादा मिले. So we are struggling hard for that. So I have made a team. You can help a little bit, and because you know this is a tendency of human being कि जहाँ पे रहते हो पौधे को बड़ा करो, जहाँ पे घर रहते हो घर को बड़ा करो, और जहाँ पे आप खुद हो आप खुद को बड़ा करो, right? This is the concept. This is the Indian concept. और इसी में सारे ग्रो करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम जहाँ रहे वहाँ पे सिर्फ फल खाएंगे पौधे नहीं लगाएंगे. तो we should eat the fruit also, and we should also grow the plants. So then you are growing, because this is the tendency. So basal level of transcription is there, permease is there, little bit of beta galactosidase is there. So as soon as the lactose is available, okay, so immediately the lac operon is not in the condition of on state. This is a very slow process. You can see this is lag, this is log, and this is a continuous, and this is a kind of down series. Continuous or stationary only, right? So this is what lactose. Lactose are unable to enter inside the cell. Why? And because size is very large, then this pore size is very small. This lactose cannot enter. So beta galactosidase is acting over them and then converting them into the yellow lactose, and this yellow lactose, small amount of yellow lactose is acting as an inducer, because enzyme is less, so less amount of yellow lactose is available. So they are entering now. Now they are able to
permeate. That's why this is called the permease enzyme. Right now, because of small size, this is a large size. ठीक है ना? So this is going on inside, and then what's happening? Can you tell me? Exactly, this is promoter, operator, and this is lac hypotension. So what is happening next? Though I'm revising, but you should know each and every figure in the depth because many students are new here. So transcription will start. How? Lac repressor cannot bind. How? Because there is a lac repressor, na? Yes. Who was switching off the lac operon? This is lac I repressor. So as soon as yellow lactose is there, this is acting as inducer by binding with the repressor, binding with the repressor and making them fall out. है ना? So their binding size is going to increase. So they are affinity. हमने affinity की भी चर्चा की थी. The affinity is going to be reduced. ऐसा नहीं है, lac operon is very easy. So they can ask you the comparative knowledge of affinity of repressor with the yellow lactose, right? When the yellow lactose is not there, the affinity will be what? What will be the affinity? Very strong, right? As soon as the yellow lactose is there, after yellow lactose is there, the affinity of what? Affinity of repressor will be reduced, right? Right. So you can draw the graph like affinity graph like this. Okay, so initially the affinity will be very high, very strong, and later on it will be very low affinity. Okay. Yes. Okay, so what is happening exactly? Now the lac operon is on state. The transcription starts completely, and you can see the complete utilization of lactose will be there, right? So what is the role of transacetylase? You know, exactly like it. लैग एक रोल किसी को क्लियर है? एनीवन? ट्रांस मॉडिफिकेशन है ना? ट्रांस मॉडिफिकेशन किसका करता है? आफ्टर एंटरिंग द येलो लैक्टोज इनसाइड, दे आर फर्दर मेड चेंजेस by this transacetylase, right? So that further modification is there, and lactose is going to be degraded into the glucose plus galactose. रिकॉर्डिंग ऑन तो है, उस दिन भूल गए थे बेटा, अभी चेक. हाँ ऑन तो है. वैसे बाय डिफॉल्ट मैंने वही रखा है, एक दिन हमने बाय मिस्टेक ऑफ कर दिया. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द लैक ओपेरॉन. यस सर. सर ये ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है? ये ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है, मतलब कहाँ से आया? लैक्टोज को ब्रेक किया ना, येलो लैक्टोज में येलो लैक्टोज फर्दर ब्रेक हुआ, ग्लूकोज गैलेक्टोज. तो गैलेक्टोज को भी फर्दर ट्रांसएसिटाइलेज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज ही उनका फेवरेट फूड है ना लैक ओपेरॉन का. दिस इज द सिंपलेस्ट वन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन. इंड्यूसिबल ओपेरॉन. फिर टीआरपी ओपेरॉन स्टडी करते हैं, ठीक है? इतना क्लियर है? यस नाउ सर जैसे एक कई बार क्वेश्चन आता है ना कि अगर हमारे पास एक जैसे बीकर है तो उसमें हमने लैक्टोज को भी डाल रखा है और ग्लूकोज को भी डाल रखा है, तो जो बैक्टीरिया है वो पहले क्या यूटिलाइज करेगा, एंड फिर उसके ऊपर ग्राफ आता है ऐसा कुछ करके. हाँ भाई, ग्राफ से एक्सप्लेन किया था, तो आंसर दे सकते हो. सपोज
There is a test tube A, test tube B, test tube C भी मान लो चलो A, B and C. This is only glucose. This is glucose, high glucose plus small lactose, and this is high lactose plus small glucose. Now, which is in the A state, what will be the fact and figure of operon? This will be the lag operon will be off. No, yes. Right here Yes. in B state, it will also be off. Right? So there will be lag phase. Yes. There will be lag phase. As soon as you are adding the high lactose, will small amount of glucose, very small amount of glucose, Yes. this is going to graph like this. Log stage, and now this will be on stage. Clear now? Yes. I think the whole situation is clear now. And in the case of lactose alone, suppose, what will happen? This will be more rising, right? And then will be continuous. Why this is continuous? Once all the lactose entered inside the cell in the form of yellow lactose, they are acting as an inducer, and that's why this is in the continuous on stage. Right? This graph is Unless and showing until. this graph is showing a little bit of continuous conversion of lactose into yellow lactose. So you have concluded all of the three test tube result in one graph, na? Right. Okay. So if we draw it singly, na, means if I took the first one, then there This will is be no A, rise in the graph, this is B. and in the second there will be little rise in the graph, and in the third one we will show the higher rise in the graph, na? Right. This will be the And sequence. in the fourth one we will say a greater This is the higher, D. na? This is the D, continuous system. Continuous. Okay, but sir, in the end, I think there will be a declining phase, na, because there must be some point, na, Yes, because which our lactose will be completely used. Forming Yeah. to The lactose glucose. is That's completely why. used. This will be the Yes, sir. declining state. okay. This is the Yeah, but the peak will be the higher na as compared to the other one. right. Yes. Okay. Right. So this is the activity of operon. Activity of operon, and this is the sugar, quality of sugar. है ना? ठीक है? Everything might be clear. Yes, sir. Now we will go through the TRP, क्योंकि बार-बार इसको पढ़ना डिस्कस करना बहुत जरूरी, इसलिए कहता हूँ डोंट मिस द क्लासेस, बी रेगुलर, है ना? जो भी है एक ना कमिटमेंट कर लो अपने आप से. मैंने तो कमिटमेंट कर ली है, और जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ उसके बाद तुम जानते ही मैं क्या करता हूँ, वो डेफिनेटली करता हूँ. ठीक है ना? तो let's see the TRP operon. What is the special feature of TRP operon? Can you tell me? TRP operon is always on. Always on. Why this is always on? Because this is biosynthetic operon. What you can say? Biosynthetic operon. ये select क्यों नहीं हो रहा है आज? There is no other color selection. What happened? One size. So
Once again, I should take it. Because when your concept is clear, then you are going to study and understand in very proper way. चलो inside ठीक है. So this is the TRP operon. What is the special feature? They have the 5 genes. This is called the structural gene. Can you give the order? Starting from the TRP. E, D, C, B, C, B, A. Right? This one is TRP. TRP. All this is called the structural gene. Okay. अब क्या होगा? Very similar to that. There will be operator. Here will be TRPR gene. And then promoter. सर आपने जीन्स उल्टी नहीं लिखी है, पहले ई होता है, जहाँ ए आएगा वहां पे ई है, आपने उल्टा लिख दिया है. हाँ ठीक है. वो एक्चुअल में यहाँ से लिखना था ना मुझे A B C D E. वो अल्फाबेटिकली रॉन्ग हो गया. चलो वेरी गुड. So you can erase this. No problem. We have the eraser. This is a very good board. You can express yourself. So, something wrong with it. Chalo. Yes, chalo. So, what is the good idea of this thing? Make it rapid. So what I am saying, this is the structural gene. No, chale gaya. Structural gene. Just wait. This is exactly. Chalo. So this is a structural gene, and we have almost 5 A, B, C, D, E. And what you can see here, operator position, repressor position, and then promoter position. Now, again we can write. Who is writing? You can perfectly, you can practice. Without writing, you cannot. You are going to forget everything. So this is TRPR. आपको क्या लगता है? मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ. मैं भी आपकी तरह रात में बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ, है ना. और जो बच्चे मिल जाते हैं उनको मैसेज भी करता रहता हूँ, आके पढ़ो. है ना. वो तो पढ़ना ही पड़ता है. हाँ, बिना पढ़े काम होने नहीं. तो TRPR इज रिप्रेशर एंड अच्छा, लाइकोग्राम में एक चीज हमने मिस कर दिया. व्हाट इज द ग्लूकोज सेंसर देयर? हाउ द बैक्टीरिया इज गोइंग टू नो दैट ग्लूकोज इज देयर? So in case of low glucose, what happens? Which kind of activator is produced, or which sensor is produced, or which catabolite is produced in case of low glucose? क्योंकि सेंसर होना चाहिए ना. जब लो ग्लूकोज होगा नहीं तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, राइट. उसको सेंसर होता है कि भाई लैक्टोज या ग्लूकोज हाई है, तब भी उसको सेंस करता है वो चीज. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैटाबोलाइट? चलो is it transacetylase? That is enzyme, no? That is not acting as a sensor. That is a catabolite. I have given you hint. That is a catabolite, not enzyme. What is the name of that catabolite? In the case of low glucose or high glucose, they are activated and they are going to sense. That is called the chemotactic movement. CAP. Yes, CAP. CAP plus CAP के साथ और क्या होता है? complex. So permease. अच्छा. सही याद नहीं है अभी. हाँ, कोई बात नहीं. चलो, ऐसा होता है. That's why क्लासेस के क्या फीचर्स होते हैं कि रेगुलरिटी बनी रहती है. भले आप बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर जानते हो, सडनली एक चीजें ऐसे आती हैं कि जिसमें आपको लगता है कि, है ना, थोड़ा सा मिस कर रहे हो. तो ये फायदा हो जाता है. दिस इज द टीआरपी ऑपरेंट, दिस इज द एक्चुअल रिप्रेसर, दिस इज द ऑन स्टेट. तो ये बताओ, टीआरपी आज जब रिप्रेसर है, प्रेजेंट है,
So why this is in on state? जब रिप्रेसर ऑलरेडी ढेर सारा है, बना पड़ा है, तो स्टिल दे आर ऑन द ऑन स्टेट. अब इससे बड़ा मतलब क्या होगा? What you can say? There is a lot of repression you can see, but still this is in the on condition. So you can say that they need additional thing, that is co-repressor. They need what? They need co-repressor. Without co-repressor, what is the co-repressor? So जो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं. सॉरी, उसको What is the remove कर name? देता है रिप्रेसर What is the name of that co-repressor? और यहाँ पे स्टेजेस क्या होती है? What is the precursor of this tryptophan? Samantha, you are not speaking a single word. What happened? Bipul, बताओ बेटा. What is the tryptophan? ऐसे तो बनेगा नहीं, कोई precursor चाहिए. क्या precursor होता है? What is the name of precursor? हाँ, कोरिस्मिक एसिड. यही बोला आपने? Yes, sir. कोरिस्मिक एसिड देन Corismic acid to corismic, right? इसके sir? बाद Then एंथ्रेनिलिक एसिड. yes, देखो अभी ये हालत है, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था. एंथ्रेनिलिक एसिड फिर क्या बनेगा? Then I know. Phosphoribosyl anthranilic acid. ठीक है, इस पे फास्फेट लग जाएगा, ऐसे कह लो, एपी है ना. Yes, sir. फिर एंडोल बनेगा. Yes, sir. Indole बनेगा. तो एंडोल से क्या बन जाएगा? चलो वो छोड़ दो. Then L-tryptophan. L-tryptophan, sir. हाँ, tryptophan बन गया. And if the tryptophan is very high, then what should happen? Then it will act like the co-repressor. Yes. Now what you can say that yes, this is a kind of co-repressor. Now they are acting as a co-repressor, binding with the repressor and combining. So you can make like this structure. This is not enough structure. Yes, this is a co-repressor plus repressor. Now they are able to bind what? This site. Okay, this site. Now they are blocking this site. They are blocking this site. So as a result, what will happen? This RNA polymerase is not going to move anyway. So ultimately what you can say, this will be in the off condition. This will be in the off condition. What will be in the off condition? The Operon will be off. Got the idea? Repressor plus co-repressor. Then this is the off condition. मतलब जरूरत नहीं है. That's why this is called as the biosynthetic operon. Biosynthetic operon. So what is the repressor? Repressor is the TRPR. Co-repressor plus repressor is the acting as a, what is the activator? Activator here itself is the co-repressor. ठीक है ना, जो कि repressor को active कर रहा है. Affinity of the repressor is increased or decreased by binding the co-repressor. चलिए. Increased. Affinity of the repressor will be increased. Increase होगा ना, बढ़ेगा. ठीक है. यहाँ पे बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? व्हाट विल द ग्राफ हियर? अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा? Initially this is in the on state. As well as it is the repressible operon, right, sir? हाँ, अगर tryptophan high amount में है तो then this is repressible. The graph will be like this. Inducible operon का graph will be like this. This is inducible.
and this is replaceable. replaceable. ठीक है? Replaceable था lactose. अच्छा ये बताओ टीआरपी सॉरी लैक आई रिप्लेसर का स्ट्रक्चर क्या होता है? Tetramer होता सेल है में हाँ Tetramer. टेट्रामर दिस इज ऑलमोस्ट टेट्रामर. ठीक है टेट्रामर ठीक बात है ना. सो दे आर गोइंग टू होल्ड द डीएनए लाइक दिस. दिस इज द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था. अब हम आते हैं यूकैरियोटिक. इतना क्लियर है ना अभी सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया बोर्ड पे. आज का ग्राफिक्स ये वाला ज्यादा अच्छा रहा ना. जो पेन से बनाता हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. अभी सीधा सीधा है एरो है ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगा होगा आपको. Am I right? So the color. Yes, sir. Color is missing. Color is missing. कोई नहीं कलर कर लो यहाँ पे. But sir, one thing I have to say, sir, इसके साथ जैसे अगर जैसे डायग्राम रहता है ना, मतलब जैसे आपने बना दिया ना, तो जैसे अगर दूसरा डायग्राम रहेगा जैसे जो नेट पे अवेलेबल रहता है तो उससे थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे ना से सारा आप समझा रहे हो, समझ में आ रहा है, इट्स फाइन. बट एक बार जैसे उसको देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती है. तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी जो है ये तो स्टार्ट है. हम क्लास लेक्चर स्टार्ट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं पीपीटी पे सीधे सीधे. राइट. So what is the benefit of gene regulation? So you can see for all kind of organism this is going to provide the versatility, adaptability, right? Because a lot of protein is going to be expressed. So you can see multicellular organism, especially this kind of regulation is required in the two condition. In the cellular differentiation case, now you are happy, I think. Yes, sir. You will see the diagram. The things will be more clear in the PPT presentation. We have the PPT presentation, but we are practicing the blended mode of study. So initially we are understanding the concept, we are stretching the concept, Yes, sir. Yes, sir. and then we are stretching it into the details, because this is a kind of piece study. PPT study is a kind of piece study, means we are not studying everything in a single stretch, rather than part by part we are studying. So it's taking time. For example, we are talking about the eukaryotic regulation, then you can see from signaling to transcription to post-translation, everything is a part of regulation. Here you can see this is the piece of DNA, primary transcript formation, then processing are there, pre-RNA and then final post-RNA is there. Then they are transporting over the nucleus, right? Then there is a translational control. So we have to study at large, starting from here. This is called the epigenetic changes, right? What is the best example of epigenetic changes? बता सकते हो? मिथाइलेशन. मिथाइलेशन से क्या होता है? Certain gene are silenced. किसी जीन को नॉन एक्सप्रेसिव बनाना है तो मिथाइलेशन मस्ट बी देयर. और सीसैर ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके न्यूक्लियसों में एसिटाइलेशन ज्यादा कर दे तो कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ओवर द न्यूक्लियस? व्हाट यू विल से? Positive charge. DNA is negative. Negatively charged. So if this is your nucleosome, and if this is a methylated, so its negativity is going to decrease. But if you are, on the other hand, if you are adding the acetyl group, which is the carrying the negative charge, so its negativity will be increase. अभी समझ आ गई बात? तो अगर आप पॉजिटिविटी बढ़ाते हो तो देयर विल बी मोर कॉम्पैक्शन. अगर आप एसिटाइलेशन बढ़ाते हो, फिर
ये ओपनिंग होती है, Restlessness also. ओपनिंग होती है न्यूक्लियोसोम की, एंड डीएनए इज गोइंग टू सेपरेट. Untitled. दिस इज कॉल्ड द इपीजेनेटिक चेंजेस. तो जिसको जीन को साइलेंस करना होता है, दे आर एडिंग मोर काइंड ऑफ मिथाइल ग्रुप, right? They're hiding from the gene expression because the compaction is going to increase. Am I right? Is there any doubt? It didn't clear to me. So एक बार अरे फिर very से simple. बता दें. मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, है ना? हाँ जी. अब बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोसोम की. न्यूक्लियोसोम तो बेसिक होती है ना अमीनो एसिड, हाँ. याद है ना? तो ये क्या होगा? इट प्रोवाइडिंग द पॉजिटिविटी. बट अगर आप मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो तो इट इंक्रीजिंग द पॉजिटिविटी, मींस रिड्यूसिंग द नेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना? यानी पॉजिटिव नेगेटिव और ज्यादा लाओगे तो सीधी सीधी बात है 2+ 2- स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक? और 1+ है और आपने 4 नेगेटिव कर दिया, इट विल बी वीक इंटरेक्शन, रिपल्सन होगा ना. नेगेटिव नेगेटिव आप यहाँ नेगेटिव नेगेटिव दे रहे हो, ये रिपल्सन हो रहा है ना, काइंड ऑफ रिपल्सन. सीएसआर के साइंटिस्टों ने ब्रेन लगाया कि ऐसे क्वेश्चन पूछो, लेट देम सी द स्टूडेंट कॉन्सेप्ट व्हाट दे आर थिंकिंग. अगर आपने पॉजिटिविटी बढ़ाया, इधर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जितना जितना बना वो न्यूट्रल हो गया एक तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग चांसेस ज्यादा है. लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर आपने नेगेटिव ढेर सारा एसिटाइल डाल दिया, रिपल्शन के चांसेस ज्यादा हैं. तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो वीक बाइंडिंग होगी. तो एज ए रिजल्ट, क्योंकि और वहां पे थोड़ी ना कोई हाथ लगा के खींचने वाला है न्यूक्लियोसोम को डीएनए. हाँ जी, हाँ जी, ये फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स है, दैट इज वर्किंग ओवर देम एंड दे आर सेपरेटिंग द डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोसोम. तो मिथाइलेशन में क्या होता है, जीन साइलेंसिंग में क्या होता है, मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन, दीज टू आर द अपोजिट फैक्टर्स. यू कैन एनहांस द स्ट्रेंथ, यू कैन reduce the strength of DNA by adding either the methyl group or acetyl group. Clear है? Okay. Got the idea? This is called as the epigenetic. Yes. So you can see signal transduction is also one kind of gene regulation where hormones are there, right? तो जैसे अगर मान लो आप फीमेल हार्मोन की बात कर लो, मेल हार्मोन की बात कर लो, तो दे आर प्लेइंग ए डिफरेंट रोल, है ना? वो भी जेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं, सॉरी जीन चेंजेस कर रहे हैं, प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. दे आर प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन पुटिंग ऑफ सर्टेन जीन्स इन द एक्सप्रेशन, बिकॉज gene expression depends on the mRNA totally, right? So signal transduction is there, that is deciding certain gene to express, certain gene not to express. जैसे मॉर्फोजेनेसिस में आपने देखा होगा, right? फिर हार्मोनल डेवलपमेंट में देखा होगा, तो वो एग्जांपल हम साइड करेंगे थोड़ी देर में. Then there is a chromatin modeling, अभी पढ़ रहे थे. Methylation is a kind of chromatin remodeling. Acetylation is a acetylation and methylation is kind of chromatin remodeling with the chromatin domains. Transcription is one way where transcription factor is there, right? A lot of different transcription factors are there, and they are responsible for either making the gene on or making the gene off. If anywhere there is a gene on-off structure, this is called as the gene regulation. Okay. And then post-transcriptional modification is there. You know, there is a 4 type of post-transcription modification. तो इसमें काफी CSIR ने क्वेश्चन लास्ट 2 to 3 years में पूछा हुआ है, तो we'll also discuss. And then RNA transport, translation, and then mRNA degradation also, creating a various kind of RNA. Now you can see the gene modification or chromatin remodeling. This is the, you can say, modification of the histone tail, right? So you can see S2 tail, S3 tail, S4 tail, everything
whatever coming out of the nucleosome, this is called as the tail, right? So modification can be done. Their electrostatic interaction can be decreased or increased by the histone tail modification. How you can modify the histone tail? By more acetylation. By more acetylation, decreasing the compactness. ठीक बात है. और compactness को बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे acetylation ज्यादा किया तो they are now far apart. यहाँ पे देखो कितना compactness था, दिखाई दे रहा है पिक्चर में. यहाँ पे देखो जैसे acetylation increase किया, what happened? बोलो. Compactness कम हो गई. This is called as the remodeling, right? You can change the gene expression. अगर आपने acetylation नहीं बढ़ाया तो वो DNA ओपन ही नहीं होनी, तो फिर एक्सप्रेस कैसे होगी? That is called the histone modification, histone tail modification, you can say rather, right? By the DNA methylation or acetylation. What is the non-coding RNA? What is the role of non-coding RNA? Non-coding RNA also playing kind of gene silencing, right? And what is the enzyme involved in methylation of DNA? Methyl transferase enzyme. ठीक बात है, clear है. And another what you can say nucleotide that is especially involved in the gene silencing is, or such kind of prone to modification is CpG isolate. CpG isolate. Right? They are more prone to what? Methylation. They are more prone to methylation. So there may be abnormal methylation, where you can observe the abnormal methylation in the case of oncogenesis. अभी आपको लग रहा होगा ना फ्रेश पढ़ रहे हैं जैसे सारी चीजें, जबकि एक बार पढ़ा चुका हूँ. ऐसा लग रहा है ना? Abnormal methylation pattern are more involved in oncogenesis. तो oncogenesis पे अगर क्वेश्चन आता है कि why does there is a more kind of cell division, what prompt them? So there is a one thing that prompt them for more cell division, that is more availability of DNA by the abnormal methylation. नोट्स बना रहे हो ना, पेन पेपर लेके बैठो, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आप पेन पेपर पे लिखो, है ना. Everything is important. Don't assume until and unless your selection is there. कुछ भी assume करके मत चलो, ठीक है. Don't trust on yourself. Straightforward I'm saying. पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, you know. DNA methylation and histone deacetylation work together in the gene silencing. तो ये भी एक कॉम्बिनेशन नोट कर लो. DNA methylation plus histone deacetylation. कौन चला गया? अच्छा पीपल, तुम लोग अपना पैक फुल रखा करो. बिल के साथ फिर नहीं है, इसका पैक खत्म हो जाता है. CpG isolate prone to methylation, abnormal methylation lead to oncogenesis, DNA methylation plus histone deacetylation. I'm saying. What do you mean by the deacetylation? Deacetylation will result again repacking of that. Removal of the acetyl group. So if there is a removal of acetyl group and there is a more addition of methyl group, we are increasing the compactness. Right. So that's why the gene is more silent. अगर आप DNA methylation भी कर रहे हो और histone acetylation कर रहे हो, exactly what you are doing, you are increasing the gene expression. ये चीजें याद रखो, right? Yes, sir. ठीक है. So now you can see. एक हमने डिस्कस किया था कि why there is a drug abuse. अगर किसी को भी
ड्रग की लत क्यों पड़ जाती है? कोई शराब पी रहा है तो शराबी पी रहा है ना, उसको नाम क्या रख देते हैं लोग, ये शराबी है। उस पर कितने गाने बन गए है ना, मैं शराबी नहीं नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना। शराब पे मतलब जितने ज्यादा गाने सेल शराब पे होते हैं उतना तो नॉर्मल गाने भी सेल नहीं होते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ब्रेन में जो चेंजेज होते हैं। व्हाट चेंजेज ऑकर्स इन द ब्रेन? because whatever the changes you are making, right, DNA changes over there by the repeatedly taking the drugs, there is some damage to the DNA, so there are repair enzymes. So feedback देता है। हाँ, when when the repair enzyme is damages, then they that is causing the drug abuse. They are addicted to that kind of drug, cocaine, है ना, methamphetamine, alcohol, tobacco, smoke products. So just before the every movies there is a warning, है ना, एक आता है कि ये देखो इसने गुटखा खाया था, इसने सिगरेट पिया था तो इसकी डेथ हो गई, है ना, ये दिखाते हैं। तो अब पहले शुरू में जब नया नया था तो सब लोग बहुत सीरियसली देखते थे, अब तो कहते हैं अरे ये फालतू का है, इसको क्या देखना। All causing DNA damage in the brain, and that's why the continuous repair system have been altered due to what? Due to methylation of DNA or the acetylation or methylation of histone at site of damage, and thus can contribute to leaving an epigenetic scar on chromatin. Such epigenetic scar are likely to contribute to the persistent epigenetic changes found in the addicts. ठीक है, clear? जस्ट बच्चे हैं ना, गेम ही खेलते हैं टाइम पे। So is it okay? Without ठीक है? So why regulation in eukaryotes? Regulation at transcription level, post-transcription level. Already we have studied a lot about these things, but still for revision purpose, we will see the transcriptional control in detail. अभी पूरा उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है. So what controlling the transcription in the prokaryotes? This is a sigma factor, right? So from last 2-3 years, a lot of sigma factors have been asked in the examination about the different kind of protein, regulating the protein expression, right? For example, nitrogen के लिए, है ना, there is a which gene? Nitrogenase. Nitrogenase के लिए there is NTR gene. तो उसको कौन सा सिग्मा कंट्रोल करता है? Have you any idea? This sigma is there, sigma factor is there in the prokaryotic transcription. खाली प्रमोटर ऑपरेटर नहीं कंट्रोल करता, सिग्मा भी है, और सिग्मा ही गाइड करता है कि एग्जैक्टली आओ बाइंड करो। लाइकोप्रान में एक चीज हम लोगों ने मिस किया, वो क्या मिस किया तुम बता सकते हो? मिस ये किया कि यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर, वहाँ पे आके सिग्मा फैक्टर पहले बाइंड करता है ना? नहीं, यहाँ पे साइक्लिक एमपी और कैप पहले ये बाइंड करेगा तो ऑपरेटर पे, हाँ प्रमोटर पे ऑपरेटर पे सर, ऑपरेटर पे, चलो हाँ ऑपरेटर पे, छोड़ो इसको, ऑपरेटर पे। फिर ये इनवाइट करेगा इसका जो होता है अल्फा पोर्शन आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है ना। अल्फा बीटा दो पार्ट होते हैं ना, अल्फा पार्ट, अल्फा बीटा ओमेगा बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्ट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस साइक्लिक एमपी कैप, और इसको देख के ही यहाँ पे बाइंड करता है, तब ये इनहेंस करता है। यहाँ सिग्मा भी है, बट लाइकोप्रान के लिए कोई सिग्मा मुझे मिला नहीं, तो वो मैंने देखा नहीं, लेकिन एनटीआर के लिए जैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए मानते हैं कि सिग्मा 70 है,
ओके, नाइट्रोजनस के लिए क्या है, सिग्मा 32। ओके, इसी तरह से पूरी लिस्ट दी है, वो लिस्ट सीएसआर, देखो सीएसआर के लिए अचानक से तो पढ़ा नहीं देंगे कि ये यार ये याद कर लो, ये याद कर लो ना, वो डेटा कितना याद करोगे, डेटा इन फैक्ट इज पेनफुल ना टू ब्रेन। तो वो मैं तुम्हें डेटा एक बार दिखा देता हूँ। सिग्मा 70 हाउसकीपिंग जीन है। हाउसकीपिंग जीन्स का डेफिनेशन ही पूछ दिया था पिछली बार, व्हाट डू यू मीन बाय द हाउसकीपिंग जीन। वो 4 ऑप्शन में से विच वन इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हाउसकीपिंग जीन, तो ये बता सकते हो आराम से। -35 -10 के रीजन में। सिग्मा 38 स्टेशनरी फेज जीन एंड जनरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। सिग्मा 24 अनफोल्डेड प्रोटीन के लिए। सिग्मा H और सिग्मा 32 this is for the chaperones. Sigma 28 flagellum. Sigma 18 iron uptake. Sigma 54 है, वो मैं गलत बता दिया 32, that is the sigma 54 in case of nitrogen metabolism. So this is from the research data published in the annual review of microbiology. Okay, so note कर लो इसको, ठीक है। तो मेरी पिक्चर ही नहीं आ रही है, लाइट को थोड़ा रखोगे ना, ठीक है। बच्चे होते तो मैं बड़े बड़े प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू सबको बुला लेता। यूजीसी के चेयरमैन हमारे फ्रेंड है जो सीएसआर कंडक्ट कराते हैं, उनके डिपार्टमेंट में मेरी कलीग है। सर अभी एक तो ना ऑफलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो अभी शुरू हो गई हैं, तो इसलिए फिर सारे ही ऑफलाइन की तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सारे नहीं जा रहे, क्योंकि मैं बताऊं बहुत सारे गर्ल्स की प्रॉब्लम ये है कि दे आर मैरिड एंड टेकिंग सिटिंग एट होम, तो उनका एक रहता है कि भाई है ना, लास्ट ईयर तो बहुत सारी मैरिड गर्ल ही ज्वाइन की थी और उसमें से कईयों ने निकाला भी से यार। तो गर्ल्स का तो होता, अभी खुशबू एक लड़की है, उसने भी कांटेक्ट किया था, शी गॉट मैरिड लास्ट ईयर, तो बीच में उसने छोड़ दिया, तो नाउ शी वांट टू कंटिन्यू। तो गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, फैमिली से होता है कि उनकी मैरिज हो जाती है, तो वो ऑफलाइन मोड में नहीं जा सकते। और ऑफलाइन की फीस भी कितनी महंगी होती है, 45 प्लस है। अगर पाथफाइंडर नहीं सर इतनी नहीं है, मैंने पे करी थी ना। अच्छा, इतनी फीस तो नहीं है सर, 55 वगैरह तो कुछ भी नहीं है। मैंने जो पे करी पाथफाइंडर की कितनी है सर, वो बहुत हायर इंस्टीट्यूट है ना, जो अगर जैसे पाथफाइंडर है या फिर अपना बायोटेक्निका सर, उनकी है इतनी ज्यादा। अगर आप जैसे किसी लोकल इंस्टीट्यूट में जाते हो जो अच्छे हैं, जैसे आई रिसाइड इन चंडीगढ़, तो जो यहाँ के भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो दे विल चार्ज यू अराउंड 25, 28, 30, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं चार्ज करते। 30 भी बहुत है, हमारी फीस तो बहुत ही कम है, 15 तक मैक्सिमम जाती है हमारी फीस, भी लाइफ टाइम के साथ। सर फिर उनका ऐसा रहता है ना, जैसे सुबह वो बुलाएंगे एंड उनका जो बैच रहता है 3 बजे तक रहता है सर। 3 बजे तक हम लोग 8-9 बजे चले जाते थे, 3 बजे तक हम लोग वापिस आते थे, 3 साढ़े 3 तक। हाँ, चंडीगढ़ एक हब है ना, वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो बच्चे मिल जाते हैं। अमृतसर इज ब्लैंक, वहाँ पे केवल GNDU है, तो वहाँ पे 2-4-10 बच्चे होते हैं बायोटेक में, तो वो ऑनलाइन कहीं पढ़ते रहते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे उतने बच्चे हैं नहीं वाले पे। ऑफलाइन तो मैं अभी मैंने ऐड भी डाली थी, आपने देखा होगा। मैंने अमृतसर सर आप कहाँ टीच करते हो? अमृतसर में, मैंने वहां पे डाली थी ऐड कि भाई अब फ्री पढ़ लो आके। नहीं तो ना ऐसा होता है, जैसे आपका बायोटेक के स्टूडेंट्स है ना सर, आप उनको ही बोल सकते हो कि मतलब जैसे अभी वो कर रहे हैं ना, जैसे मास्टर्स कर रहे होंगे, तो अभी से अगर वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दे तो उनके लिए आगे चल के वो दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब जब मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, जैसे गूगल पे करता हूँ, फेसबुक पे जाती रहती है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। तो लास्ट ईयर MSc के आई थिंक 4-5 बच्चों ने ज्वाइन भी किया था, तो अभी फाइनल ईयर में है। तो जैसे लक्ष्मी है, अभी वो इंटर्नशिप कर रही है, प्रोजेक्ट प्रोफेशन मोड में है, तो शी इज नॉट कमिंग। इसी तरह से 2-3 और बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे आते हैं, बट अभी क्या है कि ये डिजर्टेशन टाइम, एग्जामिनेशन टाइम,
दे आर हैविंग ए लार्ज गैप, है ना, तो वो फिर मिस कर जाते हैं बेचारे। सर उनको नहीं, मतलब डेजर्टेशन वालों को नहीं, जैसे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले होते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेम या सेकंड सेम या थर्ड सेम, सो वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मुझे लगता है ना, अगर हम लोगों ने उस टाइम पे प्रिपरेशन करी होती ना, तो वो सब बहुत बेनिफिट रहता है। क्योंकि हम लोग ना कॉलेज टाइम पे सिर्फ उतना पढ़ते हैं जो हमें एग्जाम में आने वाला होता है, दैट्स इट। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो CSIR में आती हैं एंड हम लोगों को टच भी नहीं करते हैं। ऐसा होता है जैसे फर्स्ट सेम का अगर खत्म हो गया तो सेकंड सेम का हमें, मतलब जो पिछला सेम है उसका याद ही नहीं होता, जो फर्स्ट अगला सेम है उसका हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो भूलता जाता है ना पीछे पीछे का, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो। बिल्कुल, वो आराम से बोले, क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, यू हैव टू गो थ्रू। जैसे अगर आप mRNA की बात करो तो ये पूरा mRNA, मतलब आप मार्फोजेनेसिस अगर देख लो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर देख लो, तो किस पे डिपेंड करती, पूरी माइक्रो आरएनए पे डिपेंड करती है, पूरी की पूरी। ये 3 UTR रीजन में दे आर 3 UTR रीजन हैविंग द साइलेंसर रीजन, और माइक्रो आरएनए जा करके इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन को डायरेक्टली, या तो डिग्रेड करता है कंप्लीटली ट्रांसक्रिप्ट को, है ना। तो मार्फोजेनेसिस में आपने देखा होगा लास्ट ईयर, इधर 3-4 साल से डिफरेंट नेम ऑफ माइक्रो आरएनए दे आर आस्किंग इन द लिम्ब डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट। जैसे मैंने दिया था अपने डेप से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, पैक 6 के ऊपर भी आते हैं। पैक 6 आई डेवलपमेंट में, लिम्ब डेवलपमेंट में दूसरा जीन है, ना? तो वो सारा ये यहाँ पे है कि जीन रेगुलेशन से है। हम लोग ये कंफ्यूज जाते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट है पार्ट उसका, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी देयर, बट अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव द वेरी गुड कैच ओवर दैट। इनहैंसर की अगर बात करें तो इनहैंसर में अगर आप देखोगे तो डीएनए इज लाइक दैट। अगर आप एक कॉन्सेप्ट, चलो मुझे डीएनए इतना अच्छा नहीं बन रहा, तो अगर आप देखोगे तो इनहैंसर इज जस्ट अहेड ऑफ दिस, है ना, स्टार्ट साइट। यहाँ पे इनहैंसर है, 10 kb का डिफरेंस होता है, तो दे आर गोइंग टू मेक द लूप, है ना, डीएनए का लूप बनाते हैं इनहैंसर, डिजिटल एंड पे भी बाइंड करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ द ट्रांसलेशन। मतलब अगर इनहैंसर है तो नाम ही इनहैंसर है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। So enhancer are site on DNA helix that are bound by the activator in order to loop the DNA, bringing a specific promoter. तो loop बनाने के पीछे क्या होता है? They are bringing a specific promoter together nearby the initiation complex, so that आपका जो RNA polymerase है, they can bind perfectly, and actual expressions would be there, perfect expressions would be there. So enhancer are more common way to control the gene in eukaryotes rather than as compared to the prokaryotes. Silencer भी होते हैं, and they are exactly working opposite to the enhancer, and they are regulated by the particular transcription factor that helping in the silencing of the gene. How RNA is going to control various genes? They are going to control by the microRNA, antisense RNA, or long non-coding RNA, right? So what is the exact role of non-coding RNA? हमने शुरू में भी पूछा था। Long non-coding RNA are going to cause various neuronal disorders such as Parkinson, Huntington, and Alzheimer's disease. MicroRNA is directly going to regulate various kind of cancers, right? Because they are playing direct role in down regulating the DNA repair enzymes. There are nine microRNA are there which are going to be altered in case of these DNA repair enzymes, which are controlling the cells from causing the cancers. So gastrointestinal cancer is because of failure of activation of DNA repair enzyme, right? So we'll see the microRNA dysregulation of the gene expression occur in various kind of diseases, including the cancer, schizophrenia, bipolar disorder, जिसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत ने इसी कारण से, डिसऑर्डर के कारण से लोग कहते हैं कि सुसाइड किया था, where person have lost the ability to. So bipolar personality kind of हो जाता है क्या? So what is this basically? Bipolar disorder is a kind of neuronal disease जहाँ पे confusion बहुत ज्यादा brain में होती है, right? The person is not in state of taking the right decision.
ठीक है, उसको कंफ्यूजन की बहुत हाई स्टेट होती है, उसको लगता है कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके आई कैन रिजॉल्व ऑल द इशू, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द बाइपोलर डिसऑर्डर। तो तो ऐसे हमेशा तो अपने को देखा जाए हार्म तो करता है। बहुत ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे पर्सन है जिनको कंफ्यूजन हाँ, रहती है, सो वी कैन नहीं से ना नहीं, कि नॉर्मल जिनको कंफ्यूजन, नॉर्मल कंफ्यूजन इज द स्टेट ऑफ माइंड, है ना। जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो तो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि वो फिर क्लियरिटी मांगेगा, क्योंकि उसको यस सर। क्लियरिटी नहीं है, उसके पास फैक्ट नहीं है, डेटा नहीं है, तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है। आप एक लेवल की मेच्योरिटी गेन कर रहे हो, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ माइक्रो आरएनए के डिसरेगुलेशन से, है ना, जहां माइक्रो आरएनए को नहीं जीन को रेगुलेट करना चाहिए था, वहां पे डाउन रेगुलेट कर रहा है डीएनए रिपेयरेज, क्योंकि डीएनए तो डेली डैमेज होता है। अगर आप देखो तो किसी न किसी वजह से, जैसे नशा कर रहा है कोई, तो उसका डीएनए डैमेज होगा। कोई भी एक्सपोजर हो गया एक्सरे का, या कोई भी गामा रेज, या कोई भी हार्मफुल थिंग्स ले रहा है, उसकी वजह से डीएनए डैमेज हो सकती है। तो होता क्या है कि डीएनए डैमेज एंजाइम आर देयर, दैट इज एक्टिवेटेड एंड दे आर रिपेयरिंग, एंड साइलेंटली दे आर रिपेयरिंग, वन पर्सन इज नॉट बी नोइंग इवन कि हमारे अंदर ये रिपेयर सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब वो बिल्कुल वो रिपेयर सिस्टम खत्म हो जाता है, राइट, जैसे कि आपने यहाँ पे दिखा था पिछले स्लाइड में, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर हुआ इसीलिए क्योंकि जो इसको रिपेयर करने का एंजाइम था, जो सेल को, वो माइक्रो आरएनए ने इसको जेनेटिकली डाउन कर दिया, अल्टर कर दिया, ठीक है ना। तो माइक्रो आरएनए यहाँ पे हाईली एक्सप्रेस हो रहा है, वो डिसरेगुलेट कर रहा है दूसरे एंजाइम को, दैट्स वाई न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो रही है, वो दिख रहा है, वो बंदे में दिखना शुरू हो जाता है, राइट। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, वो उसको लगता है कि मैं स्पेस में हूँ, ठीक है, वो रहेगा धरती पे, वो स्पेस की बातें करने लगेगा, वो ऐसे ऐसे करने लगेगा रह के मीन्स यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय देयर बिहेवियर, दैट इज स्पेशल एंड ऑकरिंग इन वेरी लेस पीपल, राइट। And so what about the schizophrenia? Schizophrenia, this is a depressive order, and this is also cause of massive mRNA dysregulation of the gene. It has not been decoded ki how many genes have been going to be down regulated. Still it is believed that a lot of protein because of dysregulation have been accumulated. In the case of Alzheimer's disease in the brain, they are not going to be degraded, and as a result they are blocking the signal transduction of the neurons. As a result, sometimes person is very intelligent, sometimes person is lost. That happened in the Alzheimer, na, but I am asking about the schizophrenia. That is next to bipolar. हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये साइजोफ्रीनिया, न्यूरोसाइकियाट्रिक, वेरी वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बोथ आर हैविंग द वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। बाइपोलर डिसऑर्डर इज द डिफरेंट नेम, कि यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट आ जाती है। साइजोफ्रीनिया में क्या होता है कि धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स ही डैमेज होने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिजनरेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिजनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डाउन रेगुलेशन हो गई तो न्यूरॉन्स का फंक्शन बंद हो रहा है, यहाँ पे फंक्शनल डिफेक्ट है यहाँ पे बाइपोलर, यहाँ पे डिग्रेड हो रहे हैं साइजोफ्रीनिया, ठीक है। ये सारे इसी तरह के डिसऑर्डर हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मैसिव माइक्रो आरएनए डिसरेगुलेशन, मैसिव लेवल पे, एंड दैट इज इरिवर्सिबल, यू कैन थिंक। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसीलिए तो ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाते, बाइपोलर, शिज़ोफ्रेनिया या इवन अल्जाइमर्स के भी कितने ट्राई किए लोगों ने ना, पार्किंसन के। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आपने देखा पा मूवी आई थी, पा मूवी, इसमें ऑटिज्म था, ठीक है ना। तो वो बच्चा क्या था, वो बचपन से ही डिग्रेड हो रहे थे उसके न्यूरॉन्स, वो पढ़ा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि न्यूरॉन्स का क्या रोल है, न्यूरॉन्स का सब कुछ रोल है ना। न्यूरॉन सिग्नल देता है, न्यूरॉन हमें डिसीजन देता है, न्यूरॉन हमें पावर देता है, न्यूरॉन से सारा। अब न्यूरॉन ही चला गया तो फिर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा ना, आप मुझे बोलते रहोगे भट्ट सर, मैं ऐसे बैठा रहूंगा। नशे की कंडीशन में क्या होता है, नशे में भी तो यही हो रहा है कि हमने क्या किया, उन सारे जीन को ही डैमेज कर दिया जो कि डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व थे। तो अब वो जब तक हमें नशा मिल नहीं जाएगा तो माय ब्रेन इज नॉट गोइंग टू वर्क इवन। अब वो हम डोज बढ़ाते जाते हैं कि शायद ऐसा, अब वो धीरे धीरे हम लॉस होते जा रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर का कुछ है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो कुछ डैमेज, ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रोक पाता है नशा को, क्योंकि वो माइक्रो आरएनए तो क्रॉस कर जाता है ना, माइक्रो आरएनए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। हाँ,
यस सर, आई थिंक ये अल्जाइमर एंड ये डिजीज का हम लोग आई थिंक तभी नहीं फाइंड कर पा रहे क्योंकि जो कुछ हाँ मेडिसिन जो बना रहे हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जा नहीं सकती क्रॉस, ना शायद। हाँ अभी तो तो नैनो, इस इसीलिए करके नैनो इनके ऊपर, मेडिसिन बना रहे हैं। हाँ सर, नैनो, इसीलिए मतलब मेडिसिन बन नहीं पा रही है इनकी और ट्रीटमेंट नहीं है अभी ना इनका। नैनो मेडिसिन बना रहे हैं ना अभी, ट्रायल हाँ चल जी रहे सर, हैं। अभी बना रहे। हाँ जी सर, अभी कई और भी मेडिसिन आई है जैसे जिसमें आपको नैनो रोबोट्स भेजे जाते हैं आपकी बॉडी के हाँ अंदर ना। हाँ, एंड पता नहीं मतलब ऐसा देखा, मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली कुछ दिन बिल्कुल पहले। करेक्ट पड़ा। रोबोटिक डिवाइस कर रहा है जो फाइंड आउट करेगा एग्जैक्टली वो यस सेंसिंग डिवाइस है, नॉट सेंसिंग यस डिवाइस इन द टर्म की आप वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, फाइंड आउट की कहाँ पे प्रॉब्लम है, यस, कहाँ पे फिर दिक्कत वो है। एक चिप से स्क्रीन में दिखाएगा और वहीं से यस कमांड जाएगी, उस तरह का एंटीबॉडी फिर रिलीज होगा रोबोट के थ्रू। वो एक तरह से कह लो दे आर वेरी सिमिलर टू द एंटीबॉडीज, है ना। यस तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बी सेल्स इज मूविंग एंड पेट्रोलिंग ऑल द ब्लड सिस्टम। तो जहां पे प्रॉब्लम है तो दे आर एमएससी इज वर्किंग एंड दे आर डिग्रेडिंग some antigen, they are representing those antigens to the MSC and then large number of similar antibodies is going to be produced. So on the same concept, भाई देखो अब साइंस में कॉन्सेप्ट एक नेचुरल सिस्टम में वो ऑब्जर्व करते हैं, दे आर मेकिंग द हाइपोथेसिस एंड देन दे आर मेकिंग द ट्रायल। अब जैसे अगर आप देखो तो पीसीआर क्या है, पीसीआर इज बेस्ड ऑन डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम, सेम है। अब उसको आर्टिफिशियल मशीनरी में बना के वाह 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 यही चल रहा है। साइंस क्या है, तुम्हें क्या लगता है जितनी डिस्कवरी हो रही, जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, डॉली क्लोन आया तो दुनिया में तहलका मच गया। वो किसके लिए था? जिनको साइंस का एबीसीडी नहीं पता है उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, राइट। या उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी जिनका ब्रेन उसके आगे काम नहीं कर रहा था कि उसके आगे क्या करना चाहिए। तो जिसका ब्रेन काम किया उसको नोबेल प्राइज मिल गया। कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं किया उन्होंने। देखा कि स्पर्म, एक्चुअल में स्पर्म और ओवा का फ्यूजन क्यों होता है, ये क्वेश्चन था। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं कि यार ये खाना मिल रहा है खा लो, उसका सोचना क्या है। अब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, उसमें क्या सोचना। हमारे यहाँ दिमाग बंद करके सारे काम होते हैं, तो वी आर रिसीवर एंड, ठीक है ना। वहां पे क्या है कि किसी ने सोच लिया वो चीज कि यार स्पर्म की क्या जरूरत है, अगर स्पर्म ना रहे तो क्या कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो इस पे एक राइटर ने किताब भी लिखी है ना, कि वर्ड विदाउट मैन। आपने देखा होगा, उसमें मूवी भी बनी है, आप देखना कभी, वर्ड विदाउट मैन। तो उसमें यही सेम कॉन्सेप्ट है कि स्पर्म नहीं होगा तो क्या होगा, ओवा तो फर्टिलाइज होगा। ओवा तभी फर्टिलाइज हो रहा है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक से हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने देखा कि G0 स्टेज में रुका हुआ है, उसी को एक्टिवेट कर रहा है एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे रहा है। तो जब आपने इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो उसकी क्रोमोसोम डबलिंग हो गई और उसका इंड्यूस हो गया, G0 से G1 में जाने लगा, सब कुछ चलने लगा विदाउट स्पर्म। बस इसी आइडिया को पकड़ लिया इन लोगों ने। अब वो मेडिकल की बहुत बड़ी चीज बन गई। बायोटेक वाले तो घास खा रहे हैं बैठ के डिस्कवरी करने के बाद भी, और मेडिकल वाले क्लिनिक खोल के और दिन रात 400 रुपए गिन रहे हर मिनट में। हाँ भाई पेशेंट आया 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया। और डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस सोचे जा रहे हैं बिना पैसे के, दिन भर चाय पी रहे हैं सच है ये, बट करना है, द पाथ इज सेपरेट। Similarly, you can see GAL4 is very powerful system. This is a kind of transcriptional activity that controls the expression of GAL1, GAL7, GAL10, right? And all of which code for the metabolic of galactose in yeast. GAL4 US system is very commonly used in the recombinant DNA technology for studying the gene expression, different kind of gene expression की क्या फर्क पड़ता है ना। अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सिस्टम GAL4 US system इसीलिए इसको बोलते हैं। तो कौन कौन से गैल मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1, 7, 10, राइट। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस प्रोकैरियोट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन, ये पढ़ना है। हमने बताया था कि लीवर, सपोज देयर इज ए लीवर एंड दे आर स्पेशली इन्वॉल्व इन व्हाट, डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर का क्या काम है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो हाउ दे आर डूइंग सो, they are releasing a enzyme, ठीक है। which enzyme, cytochrome P450। ये एंजाइम को प्रोड्यूस करना है।
for the detoxification, right? This is called as the upregulation. अब अगर एजिनोबायोटिक कंपाउंड नहीं है, टॉक्सिक कंपोनेंट नहीं है, तो लीवर इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दिस एंजाइम साइटोक्रोम P450. तो सीएसआर ने इसको पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450, व्हाई दे आर प्रेजेंट इन द लीवर. ओके, इट मीन्स दैट कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल नहीं लेता है, देन दिस एंजाइम विल नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. No, there is no need to produce this enzyme. No, the regulation, that's why we call them regulation. Regulation means in certain environmental conditions they should be on or off. अगर ये दोनों सिस्टम एब्सेंट हैं तो फिर जीन रेगुलेशन वर्ड वी कैनॉट यूज. प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है? Which hormone is active? ऑक्सीटोसिन. Why? सर वो डिलीवरी Because there is a में need. हाँ, because there is a need. Environment Yes, is there, sir. तो ऑन हो गई वो जीन, तो ऑक्सीटोसिन Yes, sir. बन रही है ना? Yes, तो sir. ऑक्सीटोसिन इज देयर, तो वो सारी चेंजेस हो रहे हैं. अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो हमेशा ऑक्सीटोसिन थोड़ी ना निकलेगा. अब Yes, इस पे sir. मैंने एक केस स्टडी बताई थी कि आज से 8 to 10 years बैक व्हाट वाज हैपनिंग कि सडनली इंडिया में क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की कि जो स्मॉल गर्ल्स हैं, टीनेज गर्ल्स हैं अंडर 18, तो उनके ब्रेस्ट काफी बड़े हो रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन? तो दिल्ली में खास करके ऑब्जर्व हुआ. तो दिल्ली के डॉक्टर्स ने एक सर्वे किया, सैंपलिंग किया मिल्क का. तो वो जो मिल्क आ रहा था वो ऑक्सीटोसिन वाले मिल्क थे, जिसको कि गाय को दिया गया था, क्योंकि गाय में अगर ऑक्सीटोसिन दे दोगे तो मिल्क प्रोडक्शन इज वेरी हाई. तो वो डायरेक्टली इनटेक हो गया मिल्क के थ्रू एंड दैट वाज नॉट डिग्रेडेड. तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि Okay. हाँ, Yeah. प्रेगनेंसी लाइक because that happened in the case of pregnancy only, na. So if we are directly just consuming the oxytocin, then that Bas. type of, I think, things will be seen, na. राइट. Yeah. इसी तरह से इंसुलिन रिसेप्टर अगर डाउन हो जाए तो दे आर कॉजिंग द बीटा टू डायबिटीज. तो इंसुलिन रिसेप्टर कई वजह से, जैसे कोरोना में क्या हुआ, मेरा खुद का इंसुलिन रिसेप्टर डाउन हो गया. ठीक है, तो आई वॉज सफरिंग ए लॉट. मैं कम से कम अभी लास्ट 6 मंथ से आई वॉज सफरिंग यूजली, मतलब बहुत बुरी तरीके से बीमार था. कई बार समंता ने बोला कि सर आज आपकी वॉइस बहुत डाउन है, आपकी वॉइस में वो ताजगी नहीं है वो जोश नहीं है. तो दैट वाज बिकॉज ऑफ डाउन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर की बीटा टू डायबिटीज हो गया मुझे. शुगर लेवल वाज वेरी हाई. तो अभी मैंने इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट किया थोड़ा सा I एक्सरसाइज have heard से. about only 2 diabetes, na. That is diabetes mellitus and diabetes insipidus, na. And in the first case, I think that is diabetes mellitus, or yeah. In the case of diabetes mellitus occur by the two methods, na. There are 2 ways, I think. In one case, I think there is a insulin receptor. It doesn't work properly, and insulin will not. नहीं, bind दो to केस it होता है, 2 केस होता है. ऐसे सोचो, Okay, एक तो ऑटो डिग्रेडेशन हो जाता है, ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है. ऑटो एंटीबॉडी बन गई तो दे आर गोइंग टू डैमेज पैंक्रियास डायरेक्टली. खत्म हो गया सब कुछ, न रिसेप्टर बचा न कुछ बचा. बीटा टू डायबिटीज ये एक्चुअल में कोरोना के बाद ये थोड़ा ज्यादा केस बढ़े हैं. अदरवाइज 1 in 1 lakh का केस होता था. ठीक है, अभी क्या हुआ, 10,000 in 1 lakh का डेटा आ गया. Please explain it a bit, because I've never heard about beta 2 diabetes, na. चलो, I'm नहीं not सुना है sure तो मैं about बताता हूँ. जिसको कोरोना हुआ है, आप Yes, अक्सर sir. देखोगे कि कई जर्नल्स में रिपोर्ट में छाके. अमेरिकन, हमारे इंडिया में तो कोई रिपोर्ट छपती नहीं है ना, तुम्हें पता है. वो सेंसेशनल लोग नहीं बनने देते, बड़े ड्रामे बाजी होती है इंडिया में. इंडिया में एक ही चीज हॉबी है, मर्डर और पॉलिटिक्स. ठीक है, अभी पूरा पंजाब में एक ही बात हो रही है कि अब एक मर्डर हो गया तो दूसरा मर्डर कब होगा. वो भी 2 दिन के अंदर, आज फेसबुक में आ गया कि 2 दिन के अंदर दूसरा मर्डर होगा. मतलब ये सारे ड्रामेबाजी चल रहे हैं. यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, पॉजिटिव चीजें हैं, क्या फ्यूचर प्लान है, इंडस्ट्री आ रही है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, किसी की कोई चर्चा नहीं बनती है. तो अमेरिका में अभी बीटा टू डायबिटीज अगर आप डालोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिपोर्ट इन लैंसेट. यू नो, दिस इज द बिगेस्ट
जर्नल आफ्टर द नेचर. नेचर इज द फर्स्ट हाईएस्ट जर्नल, जहाँ पे जितने नोबल ल्यूरेट्स होते हैं उन्हीं के छपता है बस. ठीक है, मतलब या जो नोबल ल्यूरेट नहीं भी होते हैं तो उनको बाद में नोबल प्राइज मिल जाता है इफ दे आर पब्लिशिंग द नेचर. तो नेचर स्प्रिंगर में मेरा 2-3 है पब्लिकेशन. ठीक है, मैं वहां तक गया हूँ, फिर मैं साइलेंट हो गया क्योंकि इंडियन कंडीशन भाई चोरी वोरी वाला माहौल बहुत है. मेरे 4 पेटेंट्स हैं, बुक्स हैं, तो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्राइटेरिया जो मुझे एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए. या मेरे एक पीएचडी स्टूडेंट भी हो गया, उसका अवार्ड हो गया. नाउ 2 स्टूडेंट्स सर आप पीएचडी करवाते हो? हाँ जी, पीएचडी स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं मेरे अंडर में. अभी 4 सीट मेरे को मिली हुई है. ओके सर, जैसे मुझे करनी हो तो एक्चुअली आई वाज इंटरेस्टेड इन माइक्रोबायोलॉजी ना, मतलब आई हैव डन माय एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड वांट टू जस्ट do further PhD in this subject only na. So sir, can I? Yes, sure. Why you can? Okay. You can go ahead. Anna, come to meet me if you are coming to Amritsar any time. There is a university called the So what is your GND. university name? GND, you know? Yes sir. GNDU? Yes sir, GNDU. So you are teaching there? No, I'm not there. I'm associated with them. So many scientists over there are associated with me. They are like head of the department biotechnology, Dr. Pati is there. He's my very close friend. Okay. And a lot of teachers under them knowing me very well. So what we are doing, you can register in the GNDU, right? Okay. And I will be your co-guide. And the topic will be mine. I will be watching everything. So you will get the facility over there, for the lab facility and data curing facility. Okay. And who will be the guide, sir? Guide will be Dr. Pati, of course. Okay, Dr. Pati. Okay, so should I have to appear for some test? Yes. They have internal test, na? Okay. And you can join also if you have the NET examination qualified. Okay, sir. Yes, sir. No? Yes, there is a 2 criteria. Either you have to qualify the university test or you can go with the NET, at least NET GRF. Yes, sir. All these days they are seeking for the NET GRF because who will finance? Yes. And so what is the fee structure? What is the fee structure? That is the government university. The fee is very normal. Okay. I think 50,000 will be for a 1 year, not more than that. Okay. All the university are having at least 2 lakhs per year, na? No, sir. Actually, earlier I applied in one university. That is in, I think, Jalandhar. So. That is SBBS University? Yes, sir. University? Yes, sir. I was deputy director there from 2016 to 2018. 2018. So I have applied in 2019, I think. Yeah, I have applied in 2019. I have appeared for the test and I have to take admission there now. But actually, they had recently started the course now. So I was not satisfied. So I thought that I should go for somewhere else now. Because I was there now, so I know there is no competent teacher, right? Yes, sir. You're not going so to that's why I just dropped the idea to do from there, na. So I was there, and at that time when I think you will be there, so at that time Dr. Bal was there, no? GS Bal was the vice chancellor. No, sir. I don't have any idea. I just know one teacher there, na. There was Dr. Aditya. Yeah, Dr. Aditya was there. I know Dr. Aditya. Dr. Aditya don't have much knowledge. He is from fishery background, right? So he was from zoology background. Yes, sir. I know Dr. Aditya is not very impressive. He was just learning a lot of things. Actually, sir, he was also new there, na. He was a newcomer, so that's what. So he was also in learning phase, na. Learning phase. He is not competent, and I don't find there any competent teacher. That's why I left after 2 years because the group I was seeking the strong group, na.
ये अब सर मेरे पब्लिकेशन देख लो, मेरे नेचर स्प्रिंगर में कम से कम 16 पब्लिकेशन है, 16 पब्लिकेशन। ओके ठीक है ना, तो मेरे इस पब्लिकेशन बहुत स्ट्रांग है। अभी भी मेरा एक पब्लिकेशन चल रहा है, आई एम राइटिंग ए, अभी देखा होगा आपने कि देयर इज ए लॉट ऑफ पर्पल व्हीट, है ना, पर्पल व्हीट, ब्लैक व्हीट, इस तरह की एक कल्चर चला हुआ है। तो हमारे यहाँ भी हमने एग्रीकल्चर का, मैं हेड हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। तो आई एम लुकिंग द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देयर, तो मैंने वहां पे ग्रो कराया ब्लैक राइस और ये। तो वहां पे क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर है, अभी वहां पे बहुत स्ट्रांग ग्रुप नहीं है। ओके लेकिन पीएचडी Yes, sir. Earlier I was also teaching in some college of agriculture, na. So I had also left from there 3 to 4 years back, na. So yes, sir. तो मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है, व्हाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ब्लैक राइस व्हीट, ना, ब्लैक व्हीट एंड दिस पर्पल व्हीट ओवर द माल न्यूट्रिशन एस्पेक्ट। क्या ये So I don't have any idea how to write papers, na, because we have just done only one that is in our MSc time, na. when you will join it will be easy because earlier I was not knowing anything, है ना, पहले मुझे कुछ भी नहीं पता होता था। Yes, तो sir. मेरे एक को गाइड थे यूएस में, डॉक्टर प्रोफेसर कालिदास शेट्टी। Yes, sir. तो उन्होंने काफी मुझे गाइड किया। ही वाज एडिटर, चीफ एडिटर ऑफ फूड बायोटेक्नोलॉजी जर्नल। तो मेरा सबसे पहला, अभी 1.9 इम्पैक्ट फैक्टर है उसका, तो पहला आर्टिकल ही मेरा उसी में छपा था। तो एक बार उन्होंने मतलब परफेक्टली गाइड किया, कालिदास शेट्टी। वो तो अभी वाइस चांसलर है यूएस में ही किसी यूनिवर्सिटी का। फूड उनका ये कॉन्सेप्ट है, मेरा भी कॉन्सेप्ट था लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं काम करना स्टार्ट किया उस पर, क्योंकि देखो बेटा, आप जैसे माइक्रोबायोलॉजी को, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे एक डोमेन है इंडिया में, है ना, फॉरेन में कॉन्सेप्ट डोमेन होता है। हमारे इंडियन सिस्टम में न जाने कब बदला होगा, लोग रियलाइज ही नहीं करते यार। जैसे बच्चे को आइडिया आया, सपोज आपको आइडिया है कि नहीं, कोरोना के बाद मुझे जो आइडिया है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी फूड थेरेपी की, क्योंकि जो वाइटल